सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑफ है। ले, अब याद दिलाया, मैं तब से बोले जा रहा हूँ। तो मैं वेव्स को जल्दी से जल्दी कवर करता हूँ। तीन चीजें हैं जो हमको याद रखनी है। एक तो जनरल वेव्स को कैसे डील करते हैं, फिर वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग कैसे डील करते हैं, साउंड वेव्स कैसे डील करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीक में अपन लाइट वेव्स की बात करेंगे। तो वेव्स इन जनरल, जैसे एसएचएम शुरू किया था, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट all the topics of physics, if we are really mathematical about it, then each topic actually starts with a differential equation. Whether it is Newton's laws of motion, whether it is Coulomb's law, electrostatics, magnetism, each and every chapter will start from a differential equation. In this case, the differential equation is something like this. d2x by dt square is equal to d2, sorry, d2 f by dt square, d2 f by dx square, और यहाँ पे आएगा 1 by v square। तो इसको हम बोलते हैं द जनरल वेव इक्वेशन। दिस इज द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, that solution itself is a function. So that is why I have used f. This is a very typical differential equation. It is called a second degree partial differential equation. For some reason, interestingly, almost all the laws of physics are actually second degree partial differential equations. So a partial differential equation in this particular case has a solution which is a function itself, and that is why I have used f. So the solution to this second degree partial differential equation is f is equal to function of x plus minus vt. Right? This is the solution to this one-dimensional wave equation. Okay? So any function, okay, so any function which is f(x plus minus vt) of this form, right, and satisfies two particular conditions. Number one, f is continuous everywhere, and number two is f is differentiable everywhere. अगर ये कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो it is guaranteed that this function is the equation of a traveling wave. Okay, so now continuous मतलब क्या होता है और differentiable मतलब क्या होता है? Can anybody tell me in layman's terms continuous मतलब क्या होएगा और differentiable मतलब क्या होएगा? कंटिन्यूस मतलब कोई ब्रेक नहीं होगा कभी ग्राफ, ब्रेक नहीं मतलब होगा सर। ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, ग्राफ ब्रेक बिल्कुल, और कोई सडन चेंजेस नहीं होते। बहुत बढ़िया, यस। सडन चेंजेस से अच्छा मेरे ख्याल से आई लाइक शार्प एजेस नहीं होंगे। जहाँ पे टेंजेंट सडनली चेंज हो रहा है, वही डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट होता है। सो a function which is continuous everywhere and differentiable everywhere and is of the form f of x plus minus vt is the equation of a traveling wave, right? There is an alternative way of writing the same function,
and that alternate way is that you say that f is equal to x by v plus minus t. I think ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं, which is just a rehash of what I've written ऊपर. तो a function which is y is equal to 1 upon 1 plus x whole square plus 2, right? So this is a wave equation. So let me write it like this: x minus 3t whole square plus 2. So this is a wave equation. Another wave equation would be y is equal to 3e raised to the power minus 2x plus 3t whole square. This would be another wave function. ये जो functions हैं ये सब traveling wave के expressions हैं. All these represent a traveling wave. How are they representing a traveling wave? So to do that, all you have to do is look at t is equal to 0. So when t is equal to 0, this function will become y is equal to 1 upon x square plus 2. Y is equal to 1 upon x square plus 2. Now what I can do is I can take the xy axis and I can actually draw this expression y is equal to 1 upon x square plus 2 when x is equal to plus infinity, y is equal to 0, when x equal to minus infinity, y is equal to 0, when x equal to 0, then y equal to half. So the graph of this function will look something like this. ऐसा दिखाई देगा. Now, the moment I'm going to add this minus 3t here, so at t is equal to 1, so this is the expression of the function at t is equal to 0, at t is equal to 1, this same expression is going to be something like x minus, t की value 1 डाल रहे हैं, x minus 3 whole square. But now when I draw this graph, ये वाला graph when I draw, then all I have to do to go from the first equation to the second equation, graph wise, all I have to do is shift by 3 units. Very good. Shift the graph by 3 units. So ये इधर आ जाएगा 3 units. और अगर ये continuously समय change होता जाएगा, तो ये graph continuously right में shift होता जाएगा, and we will say that a pulse or a wave is traveling along the x-axis in this particular medium. Okay. The velocity of the wave, of course, would be given by y is equal to f of x plus minus vt होना चाहिए. So in this case, minus 3 should be equal to vt at t is equal to 1. So v should be equal to 3 meters per second along the positive x-axis. Positive x-axis कैसे आया? This is also not a very difficult thing to explain. So the quantity which is there inside the bracket, this quantity, right? Remember that this is the quantity that we are looking for. This is the expression जिसका function होना चाहिए for an equation to be a wave equation. यहाँ पे ये हो गया वो जो x plus minus vt का जो वेरिएबल है, तो इसको हम बोलते हैं फेज ऑफ द वेव. ये जो दो चीजें हैं इसको बोला जाता है फेज ऑफ द वेव, फेज ऑफ द ट्रैवलिंग वेव. नाउ if you were to take the phase as a constant, which it actually is, the phase of the wave, if it is
constant, then I'll get, for the first case, x minus 3t is equal to constant. And if I were to differentiate this with respect to time, then I would get dx by dt minus 3 is equal to 0, which would give me dx by dt is equal to plus 3. This is the velocity of the wave. And this is the y coordinate of the particle of the medium through which the wave is traveling. This is the x coordinate of the particle of the medium through which the wave is traveling. Okay, and this quantity happens to be Vt, or a variation of Vt. It means that हो सकता है यहाँ पे Vt हो सकता है यहाँ पे कुछ और आ जाए, T तो हमेशा ही रहेगा, बाकी वेरिएबल्स में they can change. तो इस केस में जो वेलोसिटी है वेव की, वो है 3 meters per second along the positive x-axis. In fact, when I write y is equal to f of x minus vt, then this implies a wave traveling with velocity plus v, positive v, along the positive x-axis. And y is equal to f of x plus vt implies a wave traveling the negative x-axis minus. तो ये जो equations हैं, they represent a traveling wave. And like I said, this is the phase of the wave. This is the phase of the wave. And we also have dy by dt, which will be equal to something like vf of x plus minus vt. So this gives the velocity of the particle of the medium. सर ऊपर वाले इक्वेशन में ये भी बोल सकते हैं ना कि x और t का अगर साइन सेम होगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा. बिल्कुल बोल सकते हैं. और ये x है, you have to remember कि ये y coordinate लिखा है ना, तो इसको हम we can also think of this as displacement of particle of medium. And this guy, so displacement of the particle of medium from mean position, and this guy is actually the mean position of the particle of the medium. Yeah, so this is the meaning of y, x, time तो होता है t. अब इसमें ये मैं जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है, this is for a mechanical wave, right? So there can be electromagnetic waves as well, and there can be other types of waves as well, where the y would not represent the y coordinate of the particle of the medium. It would represent a different physical quantity altogether. So if we are dealing with an electromagnetic wave, then y may be the electric field or the magnetic field. If we are dealing with a sound wave, then y may be pressure. Okay. So generally, if we are talking about mechanical waves, then y is representing the axis along which particles of the medium are moving, and x is representing the
axis along which the wave is moving. In this case, we have a particle moving along y-axis as a wave which is moving along x-axis passes through the medium. So such a wave where the direction of the velocity of the wave and direction of velocity of the particle of the medium is perpendicular to each other, right? Or 10th class wala definition, it is called a transverse wave. And if the displacement of the particle of the medium is along the axis of the propagation of the wave, then we call that a longitudinal wave. Okay? तो मेरे पास wave equations जो है ये dy by dt will be equal to the velocity of the particle of the medium, and if I were to do d2y by dt square, then I would get, I have dropped the positive negative sign, this would be equal to the acceleration of the particle of the medium. So we have, this is the general equation of a wave. Please remember, key wave equation can be any function of x plus minus vt, provided that the function is well behaved. That means no discontinuities and it is differentiable at all points. However, in nature, it is found that most of the waves, they are going to be sinusoidal functions of time. So whether I talk about sound waves, whether I talk about electromagnetic waves, we will find that these waves are sinusoidal in nature. Light waves, sound waves. The only example of a non-sinusoidal wave which comes to mind is which I have shown. ये जो दो function मैंने दिखाए हैं, this would be something like which is called a pulse. So what you do is you take a rope and you just give it one jerk, and then you just hold the rope, and you will find that the crest, that single disturbance which has been created, is traveling through the length of the rope, right? So most of the phenomena are sinusoidal. जो wave phenomena हमको दिखाई देते हैं वो sinusoidal waves होते हैं. जो सबसे common example आपको मैं बता सकता हूँ of a non-sinusoidal wave, जब earthquake आता है, when there is a seismic event which occurs in the crust of the earth, then the waves that are generated are of two types. One is called the primary wave, the other is called the secondary wave. P wave and S wave बोला जाता है. तो ये जो S wave होती है, जो not the primary wave but the S wave that is generated is non-sinusoidal in nature. So non-sinusoidal wave अगर आपके सामने आ गया तो इस तरीके से डील करना है. You will be asked to find the velocity, or maybe you'll be asked to find the shape of the wave, or maybe you'll be asked to find the maximum amplitude or something like that, which you can figure out very easily because just 1 minute. So is there a possibility that you may get non-sinusoidal waves? Yes, there is. But if that happens, then you can be rest assured that इससे ज़्यादा वो आपसे पूछ नहीं सकते. Velocity of particle पूछ लिया, acceleration of particle पूछ लिया, and ये वेव बड़ी यूनिक होती है. जैसे अगर मैं इसकी बात करूं जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, तो जो पार्टिकल इस पोजीशन पे होएगा x is equal to 5, 6, 10 whatever, तो जब ये डिस्टरबेंस उसको पास कर जाएगा तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट फिर कभी नहीं होएगा. उसका डिस्टरबेंस
एक्सक्यूज मी, उसका डिस्टरबेंस जो है वो केवल और केवल उसी ड्यूरेशन में होएगा जब वो डिस्टरबेंस उस रीजन से पास कर रहा है, उसके बाद से फिर नहीं होएगा। सर ये जो आपने इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1/2 होगा ना, हाफ होगा ना? ये t इज इक्वल टू 1 पे वेव की इक्वेशन है, ये t मतलब 0 मैक्सिमम पे डिस्प्लेसमेंट हाफ है ना? y कोऑर्डिनेट ना, हाँ, हाँ हाफ है ना, ओके सर। ये वाला हाफ होएगा। एम्पलीट्यूड कोई बोलेगा तो इसका एम्पलीट्यूड हाफ होएगा, राइट? Although we generally don't associate the word amplitude with non-sinusoidal wave, but still अगर किसी ने पूछ ही लिया तो भाई बता देना आप, ठीक है? ओके, चलो तो now we'll move on to sinusoidal waves, which is the most common wave phenomena. Sinusoidal waves. सर हाँ, सर dy बाय dt में v टाइम्स f डैश शामिल है, v times, f डैश x प्लस माइनस vt। हाँ सॉरी, यस। और a में क्या आएगा? f डबल डैश। f double dash, yes. मैंने बोला था ना कि मेरे से अच्छा कैलकुलस हो जाएगा आप लोग का, so I was waiting for this day for a very long time. Okay, so sinusoidal waves, yeah. So very easy. में काफी बस साइनसोइडल वेव्स के बारे में पढ़ना है। हाँ, लेकिन अगर जनरल वेव आ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाथ पैर फूल गया कि अरे ये क्या पूछ लिया है, या अगर ऐसा कुछ इक्वेशन दे दिया और बोला कि ये वेव इक्वेशन है या नहीं है, तो ये नहीं वहां पे नो मार्क करके आ जाना। सही। अब इसके बाद इस पॉइंट के आगे मैं फिर वापस कभी नॉन साइनोसॉइडल वेव पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो बिहेवियर होता है जो भी इसके बाद डिस्कस करेंगे, दैट इज followed by non-sinusoidal waves as well, excepting some periodic phenomena, some phenomena which may arise because of the periodicity and the mathematical sinusoidal nature of the wave. कुछ ऐसा स्पेसिफिक फिनोमिना है जो केवल उसके मैथमेटिकल फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तब हो सकता है वो एग्जिबिट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जो ऊपर वाली वेव है उसमें वेव लेंथ का कोई मतलब नहीं होता। ये जो वेव है इसमें वेव लेंथ का कोई मतलब नहीं होता है, टाइम पीरियड का कोई मतलब नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सारे टर्म्स जो है वो साइनोसॉइडल वेव से ही एसोसिएटेड होंगे, या कोई ऐसा फंक्शन हो जो पीरियोडिक हो उसी से एसोसिएटेड होंगे। Having said this, there is a very famous theorem which you may or may not have heard of. इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, दिस यू डू नॉट नीड टू नो। It is called the Fourier theorem. And when you go to college, then Fourier theorem is an integral part, or should be an integral part of your syllabus. So there are two separate things. One is Fourier transform and the other is Fourier series. Fourier theorem is related to Fourier series. And actually it is a very simple statement. It says that you take any function of x and you can actually express this function of x as a sum of sinusoidal terms, n number of sinusoidal terms. So we write this as a summation a n sine omega n x plus b n cos ओमेगा एन इंटू एक्स। ये ओमेगा मैंने थोड़ा सा गलत यूज किया है। अगर हम नॉर्मल ओमेगा यूज करना चाह रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट दिस इज एफ ऑफ एक्स, आई विल से दैट दिस इज एफ ऑफ टी। सो व्हाट दिस इज सेइंग इज दैट यू कैन टेक एनी फंक्शन and this function is essentially a superposition of n number of sinusoidal waves. So that is why I will not talk about these functions anymore.
because according to Fourier, they are nothing but a superimposition of multiple number of sinusoidal waves. In fact, if you have ever experienced dictation or speech to text in computers, so you are speaking something and the engine is translating what you are speaking into words. So what the engine is really doing is it is receiving the waves, the sound waves that you are producing, and then using Fourier analysis, it is breaking it into sinusoidal terms, and then it is analyzing those sinusoidal terms in terms of जो भी हमारा लैंग्वेज होता है. Okay? Very, very interesting phenomena. तो इसीलिए हम अभी के बाद, इस पॉइंट के बाद, हम सिर्फ साइनोसॉइडल वेव्स की बात करेंगे. हमको और किसी वेव की बात करने की जरूरत नहीं है. सर तो ये नेसेसरी नहीं है कि अ, अगर दो साइनसोइडल वेव्स सुपरइम्पोज करें तो हमेशा एक साइनसोइडल वेव ही देंगे. नहीं, नेसेसरी नहीं है. इनफैक्ट ये वेव भी एक्चुअली मल्टीपल साइनोसॉइडल वेव्स का सुपर इम्पोजिशन है. कुछ ऐसे होएगी और कुछ वेव ऐसे होएगी और कुछ वेव ऐसे होएगी. सो यू कैन एक्चुअली गूगल दिस एंड कोई भी फंक्शन, आई एम श्योर देयर विल बी वेबसाइट्स आल्सो which will show you the sinusoidal functions which produce any other function. तो जैसे टेलर एक्सपेंशन करते हैं वैसे ही फूरियर एक्सपेंशन हो जाएगा और आपको ये वियर्ड फिनोमिना जो है, मैथमेटिकल फिनोमिना हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है. चलो अब आगे बढ़ते हैं, पहले ये रिवाइज कर लें. तो y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये साइनसॉइडल वेव का इक्वेशन है. इसमें से सारे टर्म्स हमको क्लियर रहने चाहिए. ये है एक्सिस ऑफ मोशन of particle, right? And it also the displacement of the particle from its mean position. So this is displacement of particle from mean position. This is of course the maximum displacement of the particle from the mean position. This quantity is called the wave number, or it is called the angular wave number k, and please remember it is a vector quantity. अगर पॉइंट ब्लैंक कहीं पे किसी ने पूछ लिया कि ये वेक्टर होता है स्केलर होता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. इनफैक्ट a 3-dimensional wave equation would look like f is equal to a e raised to the power iota k dot r minus omega t. तो k dot r जो होता है that becomes kx into x plus ky into y plus kz into z. हम चूंकि 1-dimensional वेव की बात कर रहे हैं इसलिए ये वाला जो टर्म है kx into x ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. So this is a 1-dimensional sinusoidal wave. ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है because this wave is implying that it exists at x equal to plus infinity, x equal to minus infinity, and at t is equal to plus infinity and t is equal to minus infinity. उसके बाद से ये वाला जो x है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन. बता रहा है हमको कि ये वेव इस एक्सिस के अबाउट चल रही है और ये मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम भी हमको ये बताता है.
उसके बाद से ये हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, टाइम हो गया, और ये हो जाएगा फेज कांस्टेंट ऑफ द वेव। ओके, जो वेलोसिटी ऑफ वेव होएगी, जैसा अभी हमने किया था, इट विल बी गिवन बाय d by dt of the phase of the wave, and you equate it to 0. This gives k dx by dt minus omega is equal to 0. So dx by dt is equal to omega by k. This is the velocity of the, okay. तो ये दो तीन चीजें हैं जो याद रहनी चाहिए। वेव इक्वेशन, आई डोंट थिंक आपको वेव इक्वेशन सेटअप करने को देंगे। जैसे एच सी वर्मा में कुछ क्वेश्चंस शुरू के दिए हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा आ गया तो जो हमने एसएचएम में डिस्कस किया था, दैट इट शुड सेटिस्फाई ईच एंड एवरी कंडीशन, इंक्लूडिंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द वेव, the direction of the velocity of the particle, direction of the velocity of the wave, ये सारे फैक्टर्स यूज करके हम डिसाइड करेंगे कि फाई की वैल्यू क्या होती है। जस्ट 1 minute, लेट मी ड्रिंक वाटर। Okay, so this is the basics of the wave equation. इसके अलावा you need to know 3 things. First, जो definitions है, right? तो जो definitions है, वो आपको पहले से मालूम है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, और वापस से कर लेते हैं। k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है, f इज इक्वल टू 1/t होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई t होता है। इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करके आप वेव इक्वेशन को, साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन को वापस से दोबारा से you can set it up. Okay, so this is not the standard form of a sinusoidal wave equation. The standard form itself may have various ways of writing. So some people prefer to write this as k की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा लिखते हैं, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी लिखते हैं, फिर 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं, राइट? ऐसे भी वेव की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। सेकेंड, जब वेव ऑन ए स्ट्रिंग की बात करेंगे, राइट, वेव ऑन ए स्ट्रिंग की बात करेंगे, नहीं, इनफैक्ट जनरल वेव की बात करेंगे, तो dy by dt जो होएगा, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द particle of medium, okay, and d2y by dt square जो होएगा, that will be velocity, sorry, the acceleration of the particle of the medium.
तीसरा, now we come to the phase of the wave, phi. So phi is owing the reason why we have phi in this is that it tells us, phi tells us the initial conditions of the wave and the medium. Right? So what do I mean by this? तो ये जो इक्वेशन है y is equal to a sin kx minus omega t plus phi, या जो नॉर्मल जो हमारा वेव इक्वेशन है y is equal to f of x plus minus bt, ये जो वेव इक्वेशन है ये एक्चुअली इट कैरीज huge amount of information within itself. Okay, it looks very simple and sinusoidal function है, हाँ ये तो समझ में आ ही रहा है, but it carries within itself very large amount of information. What is the information that it is carrying? So if you think about it, y is equal to a sin kx minus omega t plus phi. Before I tell you the information, please remember कि ये ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकता हूँ, के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, मैं कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, मैं साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, मैं कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख सकता हूँ, मैं कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकता हूँ, मैं कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ प्रोवाइडेड कि मेरे इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. सो what is the information that this simple looking equation is carrying? Now this is multivariable algebra. मल्टीवेरिएबल अलजेब्रा के बारे में मैंने आपको बताया था बड़ी स्पेसिफिकली दैट हम 11th-12th में नहीं पढ़ते हैं मैथ्स के सिलेबस में, लेकिन हमको ये काम आता है फिजिक्स में. यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. एज यू विल डिस्कवर व्हेन यू स्टडी हायर मैथ्स, थोड़ा सा और ऊपर आप जाओगे तो as you will discover, whenever you are faced with this kind of a situation, then it is always best to take one step at a time. That means that you have an equation in which on the right hand side there are two variables x and t. On the left hand side there is one variable y, and you want to know what happens when things vary. तो इस केस में आपको हमेशा कैसे अप्रोच करना है, पहले आप एक चीज को कांस्टेंट कर दो, एक को वेरी करो, फिर देखो क्या होता है, एंड देन दूसरे को वेरी करो, पहले को कांस्टेंट कर दो, फिर देखो क्या होता है. राइट, दैट इज द बेस्ट वे टू हैंडल वेदर इट इज फिजिक्स, वेदर इट इज मैथ्स. सो इन दिस केस इफ आई वर टू फिक्स टाइम, so if I have this equation and if I say that let's fix the value of time, if I fix time, then whatever I'm going to end up with will be a function of x. And if I get y as a function of x, then I can actually draw this on the xy axis, and this actually represents the snapshot of the wave at that time t, right? And since time is varying, I can fix various values of time. Theoretically speaking, I can fix infinite values of time. And when I do that, I am actually going to get the snapshot of the wave at all these values of time. Okay? Alternatively, what I can do is I can fix the value of x. So if I fix the value of x, I will end up, हाँ क्या होगा? हाँ, y equal to f of t से. हाँ, y equal to f of t मेरे को मिल जाएगा. और ये क्या चीज है? What is this? So this, it turns out, is the equation of motion of the particle which is located at that x.
So not only does this equation carry within itself a snapshot of the wave at all moments in time, how the wave will physically look like at all moments in time, it also carries within itself the equation of motion of each and every particle of the medium through which this wave is passing. तो अगर ये वेव एक पर्टिकुलर मीडियम से पास कर रही है तो आपको एग्जैक्टली मालूम है कि x इज इक्वल टू 2.1 मीटर पे जो पार्टिकल लोकेटेड है उसका टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, सो ऑन एंड सो ऑन, राइट? So this equation is containing within itself a very, very large amount of information. Okay, so now let's focus on the waves on a string. तो आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? हाँ, तो ये तो नोटबुक डाउनलोड किया, नोटबुक किसी ने किया डाउनलोड, मतलब नोटबुक वाला लिंक क्लिक किया किसी ने? हाँ सर। दिख रहा है वन नोट पूरा आ रहा है नोट ये? हाँ सर, लास्ट हाँ। बार। ठीक है, तो wave on a string, waves on a string. Okay, so for waves on a string, दो तीन चीजें याद रखनी है, मैं क्विकली बता दे रहा हूं। अगर waves on a string का क्वेश्चन आया तो प्लीज रिमेंबर दैट ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स इन फिजिक्स। अगर मुझे कोई बोलेगा कि क्या है तो मेरे पास दो तीन ऑप्शन है। पहला है वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स, तीसरा है ये आपका थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो बिकॉज if you look at the PYQs of these three topics, you will find that invariably इसके क्वेश्चन सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। तो हमको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग के। क्या क्या याद रखना है मैं लाइन से लिख दे रहा हूँ, मैं ये डिराइव नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल जब क्लास होती है आई डिराइव ईच एंड एवरी फॉर्मूला, नाउ आई एम नॉट डिराइव। So the velocity of the wave on a string is given by root t by mu, where t is equal to the tension in the string, mu is equal to the mass per unit length of the string. We use lambda for mass per unit length, but because here lambda is reserved for wavelength, इसलिए यहाँ पे हम म्यू यूज करेंगे, वी विल प्रेफर टू यूज म्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा वेव ऑन ए स्ट्रिंग। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग। नाउ दिस वेलोसिटी इज जनरली कांस्टेंट बट इट कैन वेरी। How can it vary? It can vary by either the variation of tension in the string or the variation of mass per unit length of the string. Generally, mass per unit length is not going to be varied, but it can, right? They can give you a question where they can say that the mass per unit length of the string is a function of x, mu is equal to mu naught 1 plus x, something like that. And then you have to find something. टेंशन का वेरिएशन भी बहुत इजी होता है। मैं आपको बोल दूंगा कि देयर इज ए स्ट्रिंग ऑफ मास m एंड लेंथ l, राइट? और ये वर्टिकली रखा हुआ है मैंने, और ये मैंने एक स्ट्रिंग ऐसे रखी हुई है, इसका म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 plus x, something like this. So in both these cases, what we are going to do is we are going to say that, look, at a distance of x, let's take a width of at a distance of x, let's take a width of dx. So here the tension will be m by l into x, and here mu will be equal to mu naught 1 plus x. So the velocity of the
wave, if any, which is established on the string, at this point, the velocity of the wave at this point will be root m by l x divided by mu, which also happens to be m by l, by the way. ये उड़ जाएगा. So v is equal to root of x. And in this case, the velocity at this point will be given by root t upon mu naught into 1 plus x. And then you are expected to write this as equal to dx by dt, this as equal to dx by dt, and then cross multiply and integrate both sides to find out whatever is to be found. This is the velocity. Velocity के बाद जो सेकेंड चीज जो हमको ध्यान रखनी है, that is the power transmitted. The power transmitted by a string, right? तो पावर ट्रांसमिटेड के लिए हमको बहुत ही सिंपल सी चीजें याद रखनी होती हैं. ये फॉर्मूला मुझे कभी याद नहीं रहता, एंड देयरफॉर आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि आपको याद रहेगा. तो इस फॉर्मूले का एक सिंपल सा डेरिवेशन है मेरे पास, जो अगर हमको याद रहा तो हमारा काम काफी सिंपल हो जाना चाहिए. तो हम x डिस्टेंस पे और dx विड्थ का, इसका मतलब x एंड x प्लस dx कोऑर्डिनेट के बीच में हम स्ट्रिंग का एक पोर्शन कंसिडर करते हैं. ये स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो टेंशन T इस तरीके से है, एंड ऑल आई हैव टू डू इज रियली think about the horizontal component of this tension, vertical component of this tension, right? And then say that, look, the power will be equal to, मैंने actually उल्टा बना दिया है मैंने. Let me just rub this out. So I'm only interested in the tension which is acting here like this. I'll tell you the reason why मैंने उल्टा बनाया. And we are only interested in the components of this. So this is Tx and Ty. So basically the velocity of the wave in this string is in this direction. So energy or power is being transmitted from left to right. So the portion of the string that I am considering only the tension acting on the string due to the left portion. राइट वाला भी पोर्शन जो है वो टेंशन लगा रहा होगा इस पे, जो रेड एलिमेंट मैंने लिया है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटेड बाय द लेफ्ट हैंड साइड of the rope of the string to this element that I have taken. So power is equal to F dot V, बस ये याद रखना है. Power is equal to F dot V, and F is equal to m multiplied by acceleration. सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया. मैं वो नेक्स्ट चैप्टर का मैंने पहले से बोल दिया. सो फोर्स इज इक्वल टू, अगर ये एंगल अल्फा है, so force is equal to T sine alpha, right, multiplied by velocity of particle of the medium. Okay, so this is the velocity of the particle of the medium, and that is why I'm not considering Tx, because Tx and velocity of the particle of the medium are perpendicular to each other. So I'm not considering the Tx wala component. I'm only considering the Ty wala component. And if alpha is very, very small, I will get power is equal to, and this is the
real defining step, T tan alpha into velocity of particle. And the thing that I want you guys to remember, if you don't want to do this proof in the exam hall, is this. T into dy by dx, that is the value of tan alpha, into dy by dt, which is the velocity of the particle of the medium. Right? There is a minus sign also lurking here somewhere, but we are not bothered with that, because हमको जो याद रखना है वो याद रखना है कि अगर हमसे पावर पूछा गया तो t del y by del x into del y by del t होएगा, and of course del y by del x will be equal to a k cos k x minus omega t if the equation of the wave is y is equal to a sin kx minus omega t, and del y by del t is equal to a omega cos kx minus omega t. Again, please notice I'm not bothered with the positive and negative signs, so power will be equal to t a square k omega cos square kx minus omega t. For a traveling wave, we will most probably be interested in only the average power, which will be equal to t a square k omega by 2. Now, this is one of many expressions of power that you will see. Okay, and जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें जो वेरिएबल्स दिए होंगे, यू हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू that expression containing those variables. For example, here tension can be written as, so you can, I'll just, so for example, you can write tension as V square mu. Okay, or you can write omega, remember that omega by k is equal to velocity, so you can write this as Vk. Okay, so you can replace virtually any term apart from the amplitude. So amplitude is always going to stay there. So you can replace any term apart from amplitude, and you can manipulate this expression in such a way that the expression for power only contains those variables which are given in the, which are asked for in the question that you are looking at. Okay. इसमें एक चीज और याद रखनी है, सिंस आप a स्क्वायर का कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए पावर विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एंड दिस इज ए permanent feature of all sinusoidal waves, that power is proportional to the square of the amplitude. तो ये दूसरी चीज हो गई, पहला हो गया वेलोसिटी, दूसरा हो गया पावर. थर्ड, तीसरी चीज जो आपको वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग के लिए याद रखना है वो ये है कि वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग एक दूसरे से इंटरफियर कर सकती है. Now, interference is a phenomena which is shown by interference is a phenomena which is shown by all types of waves. There is no wave that will not show us the phenomena of interference. Therefore, मैं जो अब डिस्कस कर रहा हूं इंटरफेरेंस के नीचे, that is applicable not only for waves on a string but also for sound waves, so for all waves. In fact, it is also applicable for light waves. In fact, मैं इंटरफेरेंस यहाँ पे थोड़ा सा कम डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट वीक में जब हम लाइट वेव्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं इंटरफेरेंस के बारे में ज्यादा डिस्कस करूंगा, और वो जो डिस्कशन होएगा नेक्स्ट वीक वो वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग एंड साउंड वेव्स दोनों पे इक्वली एप्लीकेबल है. ओके ओके, सो अ वेरी ब्रीफ डिस्कशन ऑन इंटरफेरेंस.
Interference simply states that waves can superimpose on each other. Superposition is possible. And this superposition is not possible when we are talking about matter. Superposition of matter is not possible. Superposition of waves is possible. What happens when waves superimpose on each other? So you need to really remember a couple of things when waves superimpose on each other. And that is that the amplitudes, just like we discussed in SHM yesterday, amplitudes of interfering waves, add up like vector quantities. Yeah, this implies that there can be constructive, that is A1 plus A2, if A1 is parallel to A2. And it can also mean destructive interference. This means that A1 plus A2, if A1 is minus A2, opposite to it. ठीक है, ये माइनस प्लस कहाँ से आ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, वेक्टर कैसे हो गया एम्पलीट्यूड? So you don't really need to worry about this, because as I discussed in SHM, the magnitude of this A vector that I have written is equal to the amplitude of the wave, and the direction of this vector that I have written is the phase constant of the wave, right? तो पहली चीज हमको ये समझना है that amplitudes of interfering waves add up like vector quantities. Second, हमको जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर ये एक वेव का सोर्स है और ये एक वेव का सोर्स है, then at any random point P, waves from S1 will reach point P and waves from S2 will reach point P, right? So S2P minus S1P is defined as the path difference between the waves from S1 and S2 to P. And all we have to remember is that S2P minus S1P is equal to n lambda, n is equal to 0, 1, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, and so on. This is going to imply that point P is a point of constructive interference, which is also known as a point of maximum. And if S2P minus S1P is equal to n plus half lambda, okay, again n is equal to plus minus 1, plus minus 2, 0 भी काम करेगा यहाँ पे, plus minus 3. Then in this case, we have point P is a point of minima, destructive interference. Okay, so this is all we will talk about interference for the moment. इतना ही हमको requirement है sound waves के लिए और waves on a string के लिए. इसके आगे जो भी requirement होगी, we'll come back to it next week when we study light waves. ray optics के बाद जब wave optics करेंगे तो पूरा discussion फिर से interference का एक बार कर लें. So this is the third thing that you need to know. This happens to be valid for all waves. इसके बाद से fourth
thing that you need to know. That is interference of waves moving opposite to each other. Right? This phenomena is called standing waves. So if we have a wave, y1 is equal to a sine kx minus omega t, and we have a wave y2 is equal to a sine kx plus omega t, and these two interfere, then y will be equal to y1 plus y2. मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आई एम सॉरी, बट सुपरपोजिशन का मतलब होता है that y is equal to y1 plus y2 plus so on. So y is equal to y1 plus y2 will give me 2a sine kx cos omega. Now, unfortunately, this is not the equation of a traveling wave because it is no longer a function of the form x plus minus vt. It is a function which is having x separately and t occurring separately, not together, and therefore this will not qualify as a wave equation. However, the meaning of the terms will still remain the same. That has not changed. So y still represents the displacement of the particle of the medium from its mean position. X still represents mean position of the particle. So if you plot this on a graph paper, or if you physically try to see what is the meaning of this, y is equal to x equal to 0 पे जो particle है वो कभी हिलेगा ही नहीं. उसके बाद से x equal to lambda by 2 पे जो particle है वो 2a amplitude से SHM execute करेगा. Because remember, जब आप x की वैल्यू फिक्स कर देते हैं तो जब आप x की वैल्यू फिक्स कर देते हैं तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल मिल जाता है. लैम्डा बाय 8 वाला पार्टिकल √2a एम्पलीट्यूड से SHM एग्जीक्यूट कर रहा होगा. 3 लैम्डा बाय 4 वाला पार्टिकल जो है वो 3 लैम्डा बाय 8 वाला पार्टिकल √2a एम्पलीट्यूड से SHM एग्जीक्यूट कर रहा होगा, और x इक्वल टू लैम्डा बाय 2 वाला पार्टिकल फिर से स्टेशनरी हो जाएगा. So it turns out that the standing wave is also generating SHM for individual particles of the medium, but this time the amplitude of the SHM is different for different particles. Traveling wave में it is the same for different particles. यहाँ पे it is different for different particles, and there is no transfer of energy. Right. So this point is called a node. This point is called a node, and this point is called antinode. The reason why they have been named is because of a very simple fact that energy cannot cross nodes or antinodes. So there is energy transfer between x equal to 0 and x equal to lambda by 4, but there is no energy transfer between x equal to lambda by 8 and 3 lambda by 8. That is not possible. x equal to lambda by 4 से lambda by 2 के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, हो भी रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड या उससे पहले नहीं हो सकता है. Right? So this is called a standing wave, and the distance between two nodes or antinodes is always equal to lambda by 2, and the distance between nodes and nodes or antinodes and antinodes will be equal to lambda by 4.
ओके, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। सब लोग सो रहे हैं, क्या हो गया है? सबको जगना है यहाँ पे। लैम्डा बाई 4 होता है ये, और ये लैम्डा बाई 2 होता है, राइट। तो स्टैंडिंग वेव से क्या होएगा, व्हाट विल हैपन? So I can have a string which is fixed at both ends, and what I can do is I can make the string vibrate. And you may ask, उससे क्या हुआ? स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे तो क्या हुआ? तो स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे तो हम बेसिकली फोर्स्ड एसएचएम कर रहे हैं। और फोर्स्ड एसएचएम में जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो रेजोनेंस हो जाता है। नाउ नॉर्मली नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैथमेटिकली चैलेंजिंग होता है। आपके घर में जो दीवार है उसकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इनफैक्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं और बहुत सारी हैं। तो वो दीवार की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना इज ए चैलेंजिंग, मैथमेटिकली इट इज ए चैलेंजिंग टास्क। However, finding the natural frequencies of a string fixed at both ends is not a mathematically challenging task, because all you need to remember is that the fixed ends or the fixed points on the string will always represent nodes, and if the length of the string is L, then the basic vibration that can be set up in a string which is fixed at both ends is where end 1 which is fixed is a node, end 2 which is fixed is a node, and between them we have an anti-node. So in this case, I know that lambda by 2 will be equal to L. So lambda will be equal to 2L. So frequency, which is velocity upon lambda, will be equal to 1 by 2L root T by mu. So this is the natural frequency of the string. It is called the fundamental frequency, or it is called the first harmonic. Okay. However, there are other possibilities which may exist. ये नोड होना ही होना है, ये नोड होना ही होना है। तो हो सकता है कि नोड के बाद एंटी नोड आए, फिर से नोड आए, फिर एंटी नोड आए, और फिर नोड आ जाए। In this case, this distance will be lambda by 2. This distance will be lambda by 2. So the frequency will be given by 2 by 2L root T by mu, and this is called the second harmonic, or it is called the first overtone. Okay, I hope सब लोग लिख रहे हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है। So this is the nomenclature of the harmonic frequencies. ये word harmonic म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है। सो दिस इज a list of harmonic frequencies of a string which is fixed at both ends, right? So the nth resonance frequency or nth natural frequency is given by n by 2L root T by mu. So if you were to take a string, fix it at both ends, and if you were to drive an oscillation, and the oscillation would be one of these fundamental frequencies, then there would be resonance, and the amplitude of oscillation will become extremely large. In fact, this is what happens when you take a plectrum and you strike a guitar string. अब आप वो प्लेक्ट्रम के साथ करो या हाथ के साथ करो, जैसे भी करो, जैसे ही आपने गिटार स्ट्रिंग को स्ट्राइक किया,
आपने क्या किया कि कुछ ऐसा वाइब्रेशन दे दिया गिटार स्ट्रिंग को, ठीक। ऐसा मतलब नॉट एग्जैक्टली ऐसा होगा, हो सकता है कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है कि कुछ ऐसे हो, बट आपने एक अजीब सा वाइब्रेशन स्ट्रिंग को दे दिया। बट फुरियर ये बोलता है कि आपने कैसा भी वाइब्रेशन दिया हो, वो तो साइनोसॉइडल वाइब्रेशंस की कलेक्शन है, सुपरपोजिशन है। तो अगर इन सुपरपोजिंग साइनोसॉइडल वेव्स जो कि आपके डिस्टरबेंस से क्रिएट हुआ है, अगर उन सुपरपोजिंग साइनोसॉइडल वेव्स में से एक की फ्रीक्वेंसी उस स्ट्रिंग के किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो वो स्ट्रिंग उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस में चला जाएगा, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हाई एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करने लगेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विथ ए गिटार। आपने तो मार दिया गिटार की स्ट्रिंग को, so you have essentially driven the guitar string, with a large number of frequencies, and the guitar string out of those large number of frequencies simply picks out the one which is its natural frequency and it resonates. It starts vibrating with that particular frequency with a large amplitude, and that is essentially what you hear. You can also have a string which is fixed at one end and free at the other. In this case, this would be how the fundamental vibration of that string would look. मैंने ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल बना के रखा है, लेकिन अगर ये डायग्राम वर्टिकल होता तो शायद ज्यादा पैलेटेबल होता. You can anytime take a string, keychain or string, and you can just hang it and you can just start vibrating one end and you will see similar shape will start to present itself for the string itself. In this case, this distance will be equal to lambda by 4 and L will be equal to lambda by 4. Lambda therefore will be 4. तो इसमें खास बात क्या है याद रखने की कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो डिसाइड कर रही है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी. सो इन दिस केस वी हैव, this is called the fundamental frequency or the first harmonic. एंड उसके बाद से जो सेकंड जो हमारा वाइब्रेशन होता है, जो सेकंड, इसको मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं. सो एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट मे हैव various modes of vibration. Okay, so this is a mode of vibration and this is called the third harmonic. So even harmonics are absent from a string which is fixed at one end and free at the other. ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोलते हैं? So the reason why we say things like this, the origin of this is not physical. It's not coming from physics. It is coming from music. So F is equal to 2n plus 1 divided by 4l root p by mu. ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी. If we have a string which is free at both ends, ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हो. अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, वर्टिकल रखना है स्ट्रिंग को और उसको हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन देना है एंड को जिसको आपने पकड़ा है, और साइड से अगर आप देखोगे तो उस फ्रीक्वेंसी से अगर आपने वाइब्रेट किया जो उसकी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, तो वो इस तरीके से वाइब्रेट करने लग जाएगा. इन दिस केस ऑल्सो Fn is given by n by 12 root t by mu, right? So this is the second last thing that you must know about waves on a string.
इसके आगे यू मस्ट नो, लेट मी सी कौन सा नंबर था ये जो मैंने किया, 4 नंबर। इसके आगे पांचवें नंबर पे we must know about reflection and transmission of a wave on a string। तो वेव ऑन ए स्ट्रिंग जो है वो किसी बाउंड्री को हिट करती है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और अगर पॉसिबल होएगा तो उसका एक पोर्शन दूसरे साइड ट्रांसमिट हो सकता है। So let us consider a wave like this, a wave which is set up on a compound string like so, and this compound string has a block attached to it so that the tension will remain constant. mu1 mu2 इसका मास पर यूनिट लेंथ है। ये वेव इनपुट वेव है, इसको मैं बोलूंगा y इंसिडेंट, और इसका एक पोर्शन ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा y r, और इसका एक पोर्शन ट्रांसमिट हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा y t। ओके, so again remember we are only about formulas, derivation if you want to do, let's say you forget about कि अरे करना क्या है, उस केस में हम इंसिडेंट पावर प्लस रिफ्लेक्टेड पावर शुड बी इक्वल टू ट्रांसमिटेड पावर, पहली चीज। दूसरी चीज, y कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट O, y कोऑर्डिनेट एट पॉइंट O must be equal to y coordinate of the incident wave plus y coordinate of the reflected wave, right? ये मैंने इक्वेशन गलत लिख दिया है, तो लोग सो ही रहे हैं मुझे लग रहा है। Incident power will be equal to reflected power plus transmitted power, and y coordinate at point O will be y coordinate due to the incident wave plus y coordinate due to the reflected wave. This must be equal to the y coordinate of the transmitted wave, right? तो पहला इक्वेशन is nothing but conservation of energy। जितनी पावर इंसिडेंट हुई उसका एक पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, एक पोर्शन ट्रांसमिट हो जाना चाहिए, और जो दूसरा एक्सप्रेशन मैंने लिखा है दैट इज सिंपली टेलिंग मी दैट ये स्ट्रिंग बीच में से ब्रेक नहीं हो सकती है। इसका मतलब y coordinate of the point just to the left of O and just to the right of O must be same always। To the left of O there are two waves existing, the incident wave and the reflected wave, and therefore they are superimposing on each other. On the right side of O there is only the transmitted wave, so their y coordinates must be same। And if you do this, okay, so you'll have to write this expression in terms of मैं बता दे रहा हूं कैसे लिखना है, मैं बस जस्ट बता दूंगा फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, लेकिन मेरे को केवल जो वेरिएबल चाहिए वो वेलोसिटी चाहिए। टेंशन तो कांस्टेंट है दोनों में, तो इसको मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा, और मेरे को केवल वेलोसिटी चाहिए। ओमेगा चेंज हो नहीं सकता है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट k is equal to omega by v। तो आई विल गेट t a square omega square by 2v, राइट? इसमें से जो इंसिडेंट वेव है उसके लिए और रिफ्लेक्टेड वेव है उसके लिए टेंशन सेम रहेगा, राइट? उसके लिए ओमेगा सेम रहेगा, बस वेलोसिटीज डिफरेंट रहेंगी। वेलोसिटीज डिफरेंट क्यों रहेंगी? वेलोसिटीज डिफरेंट इसलिए रहेंगी क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी होएगी वो होएगी रूट टी बाई म्यू1, जो इसकी वेलोसिटी होएगी वो भी होएगी रूट टी बाई म्यू1, लेकिन ये पीछे की तरफ जा रहा है, और जो इसकी वेलोसिटी होएगी वो होएगी रूट टी बाई म्यू2। So the velocities are definitely different. So the equation that I will write down, that you should write down, will be TAI square omega square divided by 2v1
is equal to t AR square omega square by 2v1 plus t AT square omega square by 2v2. So ये सब cancel हो जाएगा and I will get a simple expression involving AI and AR and AT. And here also I will simply get AI plus AR should be equal to AT. एक इक्वेशन ये आया, दूसरा इक्वेशन वो आया, वहां से मेरे पास AR और AT की वैल्यूज आ जाएंगे, राइट? सो AR A reflected and A transmitted. तो पहले मैं A transmitted की वैल्यू लिख दे रहा हूं. This will be equal to 2v2 divided by v1 plus v2 into A, and the reflected wave का जो amplitude होएगा that will be given by v2 minus v1 upon v1 plus v2 into A, right? So what this tells me is that the incident wave, if it is equal to A sine kx minus omega t, then the reflected wave will be equal to AR sine kx plus omega t, and the transmitted wave will be AT sine k dash x minus omega t. Remember that the moment the wave has been transmitted, its velocity has changed, and since the frequency remains constant, its wave number will change. यहाँ पे केवल एक ही चीज ध्यान देना है, वो ये कि अगर वेव रेयरर टू डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, सो रिफ्लेक्शन फ्रॉम rarer to denser medium results in rarer to denser medium results in a phase shift of pi, right? ये कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन से आप देखोगे, अगर v1 is greater than v2, then you get negative, AR की वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है, that represents a phase shift of pi. तो वेव ऑन ए स्ट्रिंग अगर जाके फ्री एंड पे रिफ्लेक्ट होएगी तो वो बिना फेज शिफ्ट के रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी. सो फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव ए स्ट्रिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू ए पोल लाइक दिस, and if we have a string which is fixed to a pole like this, then here this represents denser to rarer, because हम oscillation allow कर रहे हैं, and this represents rarer to denser because right hand side में boundary के string की velocity ही नहीं रहेगी, string ही नहीं रहेगी. तो अगर velocity नहीं है, velocity 0 है, इसका मतलब mu का value infinite हो गया है for all practical purposes. So in this case, if this is the incident wave, right, then the reflected wave will sort of look the same. And in this case, if this is the incident wave, then the reflected wave will look like this. It will phase shift by pi. The incident trough will become reflected crest and vice versa, अगर rarer to denser हुआ तो. Okay. So this is all about waves on a string. सर हाँ, अपने पहले फिगर में क्या बनाया, मतलब वो अपने रॉड के ऊपर ये क्या कर दिया है? ग्रीन वेव ऐसे आ रही है, रेड वेव ऐसे जा रही है, ग्रीन वेव ऐसे आ रही है, रेड वेव ऐसे जा रही है. नहीं मतलब पहले वाले में अपने जो वो स्ट्रिंग है उसको रॉड से क्या किया मतलब? अरे मतलब वह स्ट्रिंग को एक रिंग पे बांधा है और रिंग को रॉड पे पहना दिया है. अच्छा ओके. समझा ना? तो ये मूवेबल रिंग है एसेंशियली, हाँ ठीक है सर. मूवेबल रिंग, और ये फिक्स्ड है.
ओके, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में हमको ये जो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा सब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो होएगा। बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक चीज ऐड, दो चीजें, तीन चीजें ऐड हो जाएंगी। प्लीज रिमेंबर क्या तीन चीजें ऐड हो रही हैं। So the first thing that will be added will be the concept of the pressure wave. Okay. Second thing that will be added will be the concept of beats. Third thing that will be added is the concept of Doppler effect. So let's quickly go through this. So the equation of the sound wave is S is equal to S naught sine kx minus omega t. Okay, this is the displacement equation as it is called. This is not a very helpful equation because in this case we are dealing with longitudinal waves. So this S essentially is displacement along x-axis, and this is the mean position along x-axis, and this is essentially very weird to graphically represent. इसका मतलब यह है डायग्राम का कि यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट पे जो पार्टिकल था वो यहाँ डिस्प्लेस हो गया है, राइट। एंड सिंस यहाँ वाला पार्टिकल यही है तो इधर 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 जो पार्टिकल्स थे वो सब यहाँ पे ऐसे कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो पार्टिकल था वो इधर डिस्प्लेस हो गया है, यहाँ बीच वाला कहीं जा नहीं सकता, तो ये सब इधर ऐसे एक दूसरे के बगल में कंप्रेस हो गए हैं। So this then would be a region of rarefaction, and this would be a region of compression, and this would be a region of rarefaction, and that is how sound wave propagates, by generating regions of compression and rarefaction. But ये displacement equation अच्छा नहीं है. This is not something that we will be comfortable with. So we replace this by the pressure equation. Pressure equation is delta P is equal to delta P naught cos kx minus omega t. मैंने यहाँ पे sin लिखा है तो यहाँ पे cos लिखा है. क्यों लिखा है cos? Because ये pi by 2 out of phase of displacement wave equation. और इसमें हमको याद रखना है that delta P naught is equal to BKS naught, where B is the bulk modulus of air, or at least the medium in which sound wave is moving. Number 2, velocity of sound wave. Again, सीधा direct formula. It is equal to root of gamma RT by M. Gamma is equal to Cp by Cv ratio. R, you know, is the universal gas constant. T is temperature, and M is molecular weight. Please remember, ये grams में होता है, but you have to use kilograms. Okay, please don't make a mistake here. Hydrogen का molecular weight, hydrogen molecule का molecular weight 2 नहीं होता है, 2 × 10⁻³ होता है.
So if you calculate the velocity of a sound wave and you don't put in the kilogram वाला units, तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत कम आ जाएगी sound. Third, just like there, we have power transmitted, and the expression for power transmitted is virtually the same. And again, I forget it, so I remember a simple proof. यहाँ से डेल्टा पी नॉट ए फोर्स लग रहा है, और ये जो पार्टिकल है मीडियम का, इसकी एक वेलोसिटी है. पावर इज इक्वल टू फोर्स. It is not delta P naught because it may be any delta P. By the way, please let's be clear on this. This is the delta P is the pressure above or below PATM. Okay, and delta P naught is the pressure amplitude. तो यहाँ पे कुछ तो डेल्टा P है, essentially PATM plus delta P into A है, लेकिन दूसरी तरफ से भी PATM into A आएगा. I don't want to worry about atmospheric pressure. I'm only interested in the power which is being transmitted by the wave, which is because of the excess pressure that has been generated. So power is equal to force dot product with velocity, and I can write this as bk s naught cos kx minus omega t a into velocity of particle. Remember, not velocity of the wave, velocity of particle. Velocity of particle is equal to del s by del t, and acceleration, remember, of the particle is d2s by dt square. So this should be equal to ds by dt, and ds by dt will be equal to s naught omega cos kx minus omega t. So this will be equal to b k omega s naught square a cos square omega t minus kx. I will generally not be interested in the instantaneous power. It will be only about the average power bk omega s naught square. Now, unfortunately, what has happened is that I am getting an arbitrary term. So the arbitrary, हाँ जी, सर बाई 2 होगा ना? by 2, sorry, yes. तो ये जो arbitrary term है, इसको उड़ाने के लिए I define the intensity of the wave instead of the average power, and that is defined as the average power divided by area, or the instantaneous power divided by area. So I get bk omega s naught square. Again, just like before, आप यहाँ पे b की वैल्यू डाल दो, k की वैल्यू डाल दो, ओमेगा की वैल्यू डाल दो, चेंज करते रहो जब तक आपके इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन आपके सामने नहीं आ जाता है. So instead of defining power, we define intensity of a sound wave. That is what we are going to do to light wave as well. ठीक है, ये हो गया पावर. उसके बाद से इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव में मैं कुछ नहीं करा रहा हूं, और स्टैंडिंग वेव्स में मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये सब एग्जैक्टली सेम है. ओके, बस यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा which is applicable only for sound waves, and that is that number 4, sound waves, standing waves. सारे फॉर्मूले सेम रहते हैं, बस अब हम एयर कॉलम को वाइब्रेट कराएंगे.
So this is an air column that will be vibrated, and closed end represents the node, and of course followed by the node there must be an antinode. So the standing wave of air vibration or sound waves will form like this, and इसका भी जो frequency होएगा वो होएगा NV/2L, बस वहां पे V की जगह √T/μ लिखा था, यहाँ पे V की जगह V ही रहेगा। फिर उसके बाद से हम ऐसा एक पाइप ले सकते हैं, इस पाइप में ऐसे फॉर्म होएगा, इस पाइप का नाम होता है ऑर्गन पाइप, और इस केस में Fn is equal to, in fact I should not write Fn, I should write F2n plus 1 is equal to 2n plus 1 V by 4L. And we can have an open organ pipe. So this guy is called closed organ pipe. This guy is called an open organ pipe. और जो पुराने मूवीज होती थी उसमें ऑर्गन्स बजते थे, या कभी आप पुराने किसी चर्च में चले जाइए तो वहां पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो परमानेंटली इंस्टॉल्ड होता है वो ऑर्गन होता है। So here Fn will be the same as before, NV/2. So here I just want to write down something which is unique. L effective in this case is L plus 0.6 R, a radius. Okay, so this is called end correction. अगर आपको रेडियस दे दिया ऑर्गन पाइप का, या आपको बोला कि प्लीज टेक एंड करेक्शन इनटू अकाउंट, तो यू हैव टू रिप्लेस L here with L effective. Here also you have to replace L with L effective. इस केस में हो जाएगा L plus 1.2 R. Okay, तो ये हमको याद रखना है। उसके बाद से नंबर 5 चीज जो याद रखनी है हमको साउंड वेव्स के लिए, वो है बीट्स। तो इंटरफेरेंस दो तरीके के होते हैं। देयर इज एन इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स इन स्पेस एंड देयर इज एन इंटरफेरेंस ऑफ वेव इन टाइम। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स इन स्पेस का एग्जांपल मैंने ऊपर दिया था, और ये जो बीट्स का फिनोमेना है, दिस इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स इन टाइम। समय के साथ इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव होता जा रहा है, वेराज पहले पोजीशन के साथ स्पेस में यहां पे कंस्ट्रक्टिव है, यहां पे डिस्ट्रक्टिव है, अब समय के साथ हो रहा है। ये कब होता है? when y1 is equal to a sin kx minus omega 1t, y2 is equal to a sin kx minus omega 2t। अगर आप इसका वेव इक्वेशन निकालेंगे तो आपके पास आएगा y is equal to y1 plus y2 is equal to a sin साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो a sin kx माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2t, राइट। के बाद से आएगा cos ओमेगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आ गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2। So we write this expression as y is equal to a cos, okay, 2 pi f2 minus f1 by 2t into sine of kx minus omega average t.
So what has happened is that this is also the equation of a traveling wave. But for this traveling wave, the angular frequency is the average angular frequency of the superimposing waves. But what is more interesting is that the amplitude of the wave is now a sinusoidal function of time. Therefore, it is going to vary with time. The amplitude itself is going to vary with time. Okay? तो ये जो वेरिएशन है इसको बीट फिनोमेना बोला जाता है. And the beat frequency, as you can see from above, is simply given by F2 minus F1. And the upper limit of human detection of beats around 8 to 10. मतलब 8 to 10 हर्ट्ज से अगर दो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है या उससे कम, तो हमको बीट फिनोमेना बीट सुनाई देगा, नहीं तो फिर नहीं सुनाई देगा. ओके. एंड फाइनली सर, हाँ, अगर मेरे पास 3 या उससे ज्यादा वेव्स का इंटरसेक्शन हो रहा है तो उसमें बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास 3 वेव्स आ जाएंगी तो हमको उसको प्लॉट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास किसी ने बोला कि हमारे पास 101 हर्ट्स है, 102 हर्ट्स है और 104 हर्ट्स. तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टाइमलाइन बना दूंगा. राइट, ये t इज इक्वल टू 0 है और ये t इज इक्वल टू कैपिटल T, या लेट मी पुट ए नंबर हियर. ये t इज इक्वल टू 1. इन दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से वेरी करेगी. इसका मतलब अगर यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड होएगा, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा. फिर लेट मी मेक दिस नॉट 104, लेट मी मेक दिस 103. फिर 102 और 103 के बीच में होएगा, तो उस केस में वापस से यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे मिनिमम आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा. अब 101 और 103 के बीच में जो होएगा उसमें यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे मिनिमम आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे मिनिमम आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा. राइट. यस सर. तो अब यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द वॉल्यूम और द amplitude of the resultant wave. ओके. कैसे ये वर्कआउट करें? यहाँ पे ये वाला जो टाइम t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इंटेंस मैक्सिमम होएगा. फिर यहाँ पे रिलेटिव मिनिमा आएगा, मतलब थोड़ा सा मिनिमा, दो का मिनिमा है, एक का मैक्सिमा है. और फिर यहाँ पे वापस से इंटेंस मैक्सिमा आ गया, assuming that zero amplitude कहीं नहीं हो रहा है, assuming that that is true, then in this case what is the frequency of variation of the amplitude? समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, बीच में हल्का सा, नॉट पूरा 0 वाला मिनिमा, बट हल्के से वॉल्यूम का मिनिमा आ रहा है, एंड देन अगेन से इंटेंस मैक्सिमा चला जा रहा है, और यही साइकिल रिपीट होती रहेगी. तो जब यही साइकिल रिपीट होती रहेगी, इसका मतलब इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी शुड बी 1 हर्ट्ज.
ओके, बीट फ्रीक्वेंसी शुड बी 1 हर्ट्ज। तो आपको कोई भी 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, एक टाइमलाइन बनाना है और टाइमलाइन में देखना है कि फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन जो हो रहा है, सॉरी, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन जो हो रहा है वो साइक्लिकल कब हो रहा है और 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स एग्जीक्यूट हो जा रही हैं। तो इस केस में जो साइक्लिकल हो रहा है वो 1 सेकेंड में एक बार साइकिल कंप्लीट हो रही है। इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 1। ओके, सर तो हमेशा सबसे छोटा जो डिफरेंस होगा वही होगा क्या? नहीं, डिपेंड करता है ना। अगर 101, 103 और 104 दिया हुआ है तो हो सकता है रिजल्ट दूसरा है। हमको केवल टाइमलाइन पे प्लॉट कर देना है, हमको फिर वर्कआउट करना है कि साइक्लिक यहाँ पे क्या चीज, साइक्लिक वेरिएशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक। अब ये जो 3 मैक्सिमा एक साथ हैं, 3 मैक्सिमा एक साथ हैं, ये 2 एंड्स ऑफ ए साइकिल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक ही साइकिल t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 पे आया है। हो सकता है कि अगर मैं 101, 104, 102 में लेके चलूं तो बीच में एक और आ जाएगा मैक्सिमा वाला। तो उस केस में जो भी फ्रीक्वेंसी आ जाए, बीट फ्रीक्वेंसी। ओके सर। फिर यहाँ पे अपन आते हैं डॉपलर इफेक्ट पे। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या याद रखना है हमको? 2-3 चीजें याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है ये। एफ डैश इज इक्वल टू एफ, राइट? यहाँ पे v प्लस माइनस वी डब्ल्यू कॉस थीटा, ओके, प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस वी डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस प्लस वी एस। सो सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे वी डब्ल्यू कॉस थीटा is the component of velocity of wind along the line joining source and observer। प्लस माइनस क्यों है? प्लस if the velocity is source to observer, minus if velocity is observer to source। V is the velocity of sound, VO is the component of velocity of observer along the line joining source and observer, and Vs is the component of velocity of source along line joining source and observer। ये जो ऊपर मैंने ये जो प्लस माइनस माइनस प्लस लिखा है, दिस इज ऑलवेज अप्रोच ऊपर वाला है, सेपरेशन नीचे वाला है। ठीक है, तो अप्रोच के लिए ये यूज करेंगे और सेपरेशन के लिए ये यूज करेंगे। इसके बाद से प्लीज रिमेंबर, नो relative velocities, ओके। उसके बाद से एको का मतलब क्या होता है? एको का मतलब सोर्स, साउंड वेव गया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ,
वापस आया, ये एको होता है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं ट्रीट करेंगे। हमारे लिए साउंड ये सोर्स होएगा, सोर्स से वेव जाएगा, यहाँ पे एक डिटेक्टर होएगा, ये डिटेक्ट करेगा फ्रीक्वेंसी, और इसी फ्रीक्वेंसी को ये सोर्स, नया सोर्स है ये, सो दिस इज अ न्यू सोर्स, उस फ्रीक्वेंसी को ये एमिट करेगा। एमिट्स डिटेक्टेड frequency. So you can actually apply Doppler effect in stages. Supposing हमारा फाइनल ऑब्जर्वर यहाँ पे है, फाइनल ऑब्जर्वर यहाँ पे, इसकी फ्रीक्वेंसी f है, डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी f डैश हो रही है, इसको f डबल डैश सुनाई दे रहा है। f डैश इज इक्वल टू f इंटू v प्लस माइनस vo अपॉन v माइनस प्लस vs। f डबल डैश इज इक्वल टू f डैश v प्लस माइनस वी अपॉन v माइनस प्लस वी। स्टेप्स में हम यूज कर सकते हैं एको के लिए। नो रिलेटिव वेलोसिटीज एको के लिए ये रहेगा। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी मैं क्यों बोल रहा हूं नहीं करना है, क्योंकि ये जो अप्रोच है और सेपरेशन है, दिस इज नॉट टू बी डिसाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटीज बट बाय velocities relative to ground। इन्हीं वेलोसिटी से, जो रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, उन्हीं से आप इसको डिसाइड करेंगे कि अप्रोच हो रहा है या सेपरेशन हो रहा है। ओके, एंड आई थिंक दैट्स इट। तो वंस अगेन आई विल सेंड दिस पीडीएफ अगले वीक के लिए। प्लीज रिमेंबर टू फ्रॉम टुडे इटसेल्फ टू दी, मैं आज कल ड्रॉप करा दूंगा मैं इसमें ग्रुप में कि ये PYQ वाले जो वो हैं। इन एनी केस आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ यू हैव योर ओन सोर्स बुक जो मैंने बोली थी खरीदने के लिए। तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के जितने क्वेश्चन हैं, प्लीज डू देम व्हेन आई रिवाइज। देन अगर कोई फंडामेंटल या कोई कंसेप्चुअल डाउट है, आई विल आंसर। अदरवाइज डाउट सेशंस लगे हैं, मेरे लगे हैं, सुमित सर के लगे हैं, दिनेश सर के लगे हैं। प्लीज यूटिलाइज, टेक आउट टाइम, कम, क्लियर योर डाउट्स। किसी भी टॉपिक में डाउट्स नहीं बचने चाहिए। PYQ कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ का मतलब होता है रटे होने चाहिए। ओके, ठीक है, यस सर। चलो ओके यस सर, सर। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। सर थैंक यू सर। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ड्रॉप कर सकते सर हो? कल का लेक्चर मुझसे मिस हो गया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, रिकॉर्डिंग जो है वो उसमें मिलेगी, जो जील का जो ऐप है उसमें रिकॉर्ड